दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर 8,42,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। तहसील चिन्योट, भवाना और लालियां के 100 से जायद देहात का जमीनी राब्ता शहरी इलाकों से मुनक़ता है। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पाक आर्मी के जवान फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर दरिया को अपनी लपेट में ले लिया, जहां मुताद्दिद मकानात गिर गए, ज़राई अराजी पानी में डूब गई है और हजारों अफराद महसूर हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के जवान पहुंच गए हैं, जो फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इंतजामिया की I'm here in Pakistan, 6 September 2014. This area was flooded. This place called Ahmednagar, district Chinnot. सारा कमरा ढह गया, बिरांडा ढह गया जी, बाले बुले लोड़ गए जी, बुआ लोड़ गया है, एक गाड़ा सिर्फ बच्चे नो सब कुछ लोड़ गया जी। This house been grounded nearly 4-5 months. They got the bricks, but they needed help to build the house. First installment to start the work. Alhamdulillah, with your help, with your donations, we build a house for them so they don't have to sleep in a barn anymore. Jazakumullah khair. His father sell small things like dry food or things like that on the streets. He's got 10 kids, 10 mouths to feed, and himself and his wife used to live in the house here. With the flood, whole house went down in the river. I'm in Sultanpur district, Hafizabad. There is a Imam Masjid. His house is, with the heavy rain, it falls down. He cannot afford to build the house. This is the room they're living in. Six people live in this room, and condition is that house is also risky. Basically, he's got 5 children. Earning is next to nothing. Inshallah, Wise Welfare will do something to help them. Jazakallah khair.